Okay, let's start the mock with Mr. Binod. Binod, ready for mock? Yeah, sir. Okay, Binod, introduce yourself. Hello, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ji. My name is Vinod Kumar, and Okay. I am from Rajasthan, Jodhpur district. I have completed my bachelor degree in civil engineering from Government Engineering College, Banswara Hmm. in 2022. Hmm. After that, I have completed my 2 month training program, which is in civil Guruji Hmm. for 2 month training program. Hmm. After that, I selected in a job as a BBS engineer in Hmm. a company. Hmm. After that, I pursuing 4 month BIM Program. professional learning course, Hmm. which is in Gurukul Hmm. by Akash Pandey sir. Hmm. Okay. Okay. So in this Gurukul program, what you learning there? That's what you're going to learn. I learned in this program like BIM, Hmm. which is a intelligent 3D based modeling Yes. course. In this course, I I learn AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Revit structure, architecture, Revit MEP, Navisworks, Hmm. Tekla, Hmm. like Okay. Very good. So right now you're learning the software AutoCAD, right? yes What sir. What is the advantage of AutoCAD? Advantage of AutoCAD is Hmm. it is a time saving, Hmm. accuracy, Hmm. time management, Time less saving. error in drawing, Okay. time saving. Okay. What do you understand by staggered command in AutoCAD dimension? Staggered. Sorry, sir, I can't recall right now. Okay. Baseline spacing. So what is the use of baseline spacing command in AutoCAD? Baseline special. Hmm. Sorry, first. How many lectures you was in AutoCAD? So How 11. 11. What you learn in lecture number 11? So I learned how to make table, staircase in plan Hmm. What is the standard riser size of the staircase? 190 mm. 190 mm. Okay. In 1 feet, how many inches? 12 inches. 12 inches. And centimeter? 13 centimeter. 30 or 30? 30. 30. Why should I hire you? Why? Because I have passionate with my work. I am self motivated. I have a good thing and a good habit to learn my atmosphere, uh, Okay. which I gave and which I have a task. I ensure that my 100% will there Hmm. within a specific time. Okay. What's your salary expectations? So 4 to 5 lakh per annum. 4 to 5 lakhs. What you going to give the services in that package? Sorry, sir. In 4 to 5 lakh, what you going to give our company? I give my total knowledge of BIM, like Hmm. structure, Revit structure, Revit architecture, MEP. Okay. But there are some persons who is providing the same work with the 3 lakh packages, because you are also fresher in the BIM, and they are also, so they are offering on, like, they are asking for the 3 lakh and you are asking for the 5 lakh.
Then Because of sir, I have a 1 year on-site experience. good, very good. Thank you so much, Vinod. This was nice to talk with you. Okay, thank you, sir. Oh, okay, ji. Now, next is Mr. Not Mr. Is Uma. Uma, on your mic, please. Uma, Uma Bharti. हेलो Hello. सर मैं 10 मिनट बाद दे दूँ क्या? Yes, yes, no issue. Okay. Som, Soumyaranjan. Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning, good morning. Soumyaranjan, tell me something about yourself which is not mentioned in your resume. Sorry, sir. Hmm? I am from Bhubaneswar. I have Hmm. worked here for 5 years in a Hmm. architecture consultancy and engineering firm in Hmm. Bhubaneswar, which is SM Consultant Private Limited. Hmm. My role here is working drawings, drafting, AutoCAD drafting of working drawings, buildings, and estimation preparation. Hmm. Cost estimation, which is basically cost estimation. Very good. Okay. In 1 meter cube, how many bricks? 1 kilometer with bricks. 430 around 430 to 470 depends on size, brick size. If it's Okay. a 9 inch or 8 inch, it depends. What is the standard brick size? Standard brick size, Standard sorry, bricks. No, not idea. Okay. And what is the compressive strength of first class brick? 75 kg per square meter. 75 kg per square meter. Sorry, square centimeter. Square centimeter. Sure. Yes, sir. Okay. Mr. Somaranjan, what do you understand by building by law? Mm, building by law. Mm, building by law. Recently, you learn about that. Uh, yes, sir. Hmm. Okay. What do you understand by RERA? There are, Hmm. yes, sir. Focus, focus. What is the standard cover we provide for the raft foundation? For 75, sir. Mm. Mm. What is Yes, the sir. standard A4 paper size? 210 mm by 297 Centimeter? Inch? eh, centimeter. Sure. Yes, sir. 210 centimeter means approx 7 feet. Hmm? Yes, sir. Mm, sir. Mm. Yes. Interviewer always try to confuse you, but you need to stand on your statements. Yes, sir. Okay. What is the use of dynamic input command in AutoCAD? Dynamic input. Sorry, sir. Okay. Where you want to see yourself in next 5 years? Mhm. Right now, I'm studying BIM. So I want to, after 5 years, I want to see myself expert in a BIM as a BIM engineer. Correct. Very good. Thank you so much, Soumya. This was nice to talk with you, and hope you do your life in your life the great things. Thank you. Okay, ji. Now, Shweta, and so after Shweta, there is a Sanjay.
Hello. Yes, Shweta. Ready for mock? Yes, sir. Okay. Shweta, introduce yourself. Good morning, sir. My name is Shweta Haribhav Devkar. I am from Kundari district, Nagpur. Uh, Kundari district, Nagpur. I have completed my Bachelor of Engineering from Guru Nanak College of Nagpur. Uh, I am. That's all, sir. That's all about you. You have a Yes, technical sir. skills, what you're learning right now. You can just explain about that, na? Yes, sir. Okay. What was the project you're in college? Sir, Gravity Dam. Gravity dam. Explain about the gravity dam. Sir, Gravity Dam in there is a work on dam Hmm. which which no, You know why I'm asking this question? yes, sir. Communication skill. Yes. Communication skills. Okay. Uh, Try to enhance because without communication you can't get job in BIM. Yes, Okay, because there is only MNCs are the maximum, and MNCs want the person who can communicate with their client, na? Otherwise, how can you do the work? Hmm? yes, sir. So, try to enhance your right now you're not in job, Pursuing the job. you are pursuing the job. What's the profile? Sir, AutoCAD in junior executives. Sir. AutoCAD. Okay, AutoCAD. You're working on AutoCAD. Okay, so try to communicate with the colleagues or there are some friends or maybe if you feel okay, this is the right person for the communication, and then try to say them okay, we can talk in the English. Definitely in starting you feel like okay, embarrassing and all, but that doesn't matter. Mm, Okay, because you need to grow up na. Your aim is the bigger one na. yes, sir. Okay, your aim is like I need to be achieve something big. Okay, you don't feel like shy for anything. If you don't know, try to learn. अभी देखो ऑटोकैड सीख रहे हो ना, बीआईएम सीख रहे हो ना, ठीक है? क्यों सीख रहे हो? इसमें भी हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए यार, हम बीआईएम सीखेंगे, क्यों नहीं हो रही है ना? क्योंकि ये स्किल है, इंग्लिश भी एक स्किल है, ठीक है? सीखेंगे, जो भी हमको लगेगा यार इससे हम बात तो करते ही है, चलो इससे इंग्लिश में बात कर लेते हैं, क्या ही बात फर्क पड़ता है, राइट? सो श्वेता, वर्क ऑन दैट, अदरवाइज क्या होगा ना कि Yes, लास्ट में आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, देखो मॉक रखते क्यों है? मॉक रखने का रीजन यही है कि आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की आदत पड़ जाए, ठीक है? हॉबी की आदत पड़ जाए, स्ट्रेंथ की आदत पड़ जाए, दिस इज जस्ट फॉर योर हैबिट. Next time I just want you just try to enhance your communication and properly try to introduce yourself, and at least try to explain about the project strength, hobbies and weakness and all. Okay. Okay. yes, sir. Okay, Shweta. Okay. Thank you so much. Yeah, now Mr. Sanjay. Good morning, sir. Good morning, good morning. Sanjay, tell me something about yourself which is not mentioned in your resume. Okay. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Sanjay Kumar Sao. I am from Bihar, Darbhanga, but I currently live in Jhajjar, Haryana. Haryana. I yeah, I have done my diploma in 2018, 2021 in civil engineering from Sant Longmal Institute of Engineering and Technology, Sangrur, Punjab. Where? I am pursuing BTech in civil engineering from Chaudhary Ranbir Singh State Institute of Engineering and Technology in Jhajjar, Haryana. It's my final year. Okay. Okay. My hobbies are playing kabaddi, swimming, cooking, and listening music. Okay. Who's your favorite singer? Arjit Singh, Arjit Singh. Why? because I love this her song, his song. Uh, his sound is very good Okay. and feel good.
Feel good. Okay. Tell me any five songs which you like about the Arjit Singh. Just name. Okay. Kesariya, sir, first, second, I don't remember, sir. See, this is your favorite person, Yes, sir. and you don't know the five song about that the person. I think he's. I don't know them because I never listen the song, any song. I don't like to listen the song. I don't know why, but I don't like. At least if someone is your favorite, try to know about that person's that you need to know about their birth. You need to know about their families. You need to know because he is your favorite. Yes, sir. Okay, Okay. if your favorite is AutoCAD, you need to know about who has created that AutoCAD, which company made this software, what's the price of that software, what is the use of, what is the advantage of. That means that is your favorite, na? Yes, sir. Okay, favorite means this is not only word. This means you need to represent and your hobby. जो हॉबी को दिन भर हम करते हैं है ना, माई हॉबी इज टू टीच यू। ठीक है, तो आपकी हॉबी क्या है? लिसनिंग द सॉन्ग। इसका मतलब आपको एटलीस्ट लेटेस्ट सॉन्ग which singers sing the latest song, who's the right now in the boom in the industry, the singers। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन है, मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन इस समय अच्छा कर रहा है, कौन इस समय गाता गाना गा रहा है। मैं कभी नहीं देखता हूँ, और मुझे लगता है मेरे लिए देखो ऐसा नहीं, तुम लोग आहत मत हो जाना। आई फील लाइक दिस इज टाइम वेस्टिंग फॉर मी बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना। No, sir. When I some work, doing some work, then I listen the music. When I cooking, then I listen. When I some work, doing some work, when drawing, also practice. This time I'm feeling lonely and sleep. My mind is taking nap. Then I listen music. Then I work focus on focus. Great. But whenever you just do the like, I like the same things, but I like poetries. Okay, I like to listen the poetries, the great poets, or this is different for the hobbies for the different person. But when you just try to listen that song, try to learn about that song, याद कर जालो सॉन्ग। अब बोलो सर सॉन्ग को याद करके हमारा क्या फायदा होगा? When you just try to force your mind कि okay, I just whatever recite that person, that singers, when you just try to listen that lyrics and try to learn that lyrics, you just try to focus on your mind। ठीक है, और अपने फोकस पे प्रेशर दे रहे हो। when you just do this, आपका मेमोरी बहुत शार्प होता है। पता है कि नहीं ये चीज? आपकी मेमोरी को शार्प करने का सिंपल तरीका है, आपके क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, और 60 स्टूडेंट्स का नाम अगर आपको याद है अपने सारे फ्रेंड्स का विथ देयर सर नेम्स, बहुत बड़ी बात है। आपके पूरे 4 साल में लगभग 200 बच्चे होंगे, 200 बच्चों का नाम याद है, फर्जी कोई मतलब नहीं है 200 बच्चों का। जब नाम याद है आपका मेमोरी बहुत शार्प होगा। और आज के टाइम में इस चीज की कमी हो रही है, पता नहीं तुम लोग रियलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. I हो रहा है, realize, sir. कर रहे हो ना? लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी ऑल्सो एंड एवरीवन। ठीक है, अभी हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को 4 साल पढ़े हैं। मैं बोल दूं कि 4 घंटे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बोलो, बहुत रेयर है और बहुत कम लोग होंगे जो एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तुमने सॉन्ग बहुत सुने हैं विथ लिरिक्स, मैं बोलूं तो तुम 10 सॉन्ग सही से नहीं सुना पाओगे। Yes, sir. राइट, दैट मीन्स व्हाट, हमारी मेमोरी वीक हो रही है। ठीक है, फर्जी चीजों को भी याद रखना है, क्यों? इससे हमारी मेमोरी शार्प होती है। ठीक है, अभी हम हरियाणा में रह रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम हरियाणा में सोशल मीडिया बैठ नहीं चला रहे हैं। कितने सिटीज हैं हरियाणा में? ओके, कैपिटल मान लो याद होगा। ठीक है, कौन सी कैपिटल है, कौन सीएम है, क्या हम इसके बारे में फोकस कर रहे हैं? ठीक है, कौन सी नई योजना, और देख रहे हैं सब कुछ। Yes, sir. Focus नहीं कर रहे हैं. फोकस नहीं कर रहे हैं, और यही फोकस का जो प्रॉब्लम है, हमारे देश में कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। जब फोकस ही नहीं तो रिसर्च कहां से होगा? ओके, जस्ट ट्राई टू शार्प योर माइंड। जबरदस्ती फर्जी याद करो। आपके क्लास में यहाँ पर देखो 19 बच्चे प्रेजेंट है, क्या सबका नाम पता है आपको? No, sir. नहीं, लेकिन बड़ी कॉमन चीज है, खाली बैठे जिस समय सर कुछ प्रोजेक्ट करा रहे हैं, मुझे पता है, चलो मैं देख लेता हूँ कौन कौन है क्लास में।
है ना, मेमोरी शार्प होती है इससे। तो ट्राई टू नो अबाउट दैट एंड क्या बोलते हैं, ट्राई टू नो अबाउट कि तुम्हारे घर में इतने लोग हैं, ठीक है, मान लो तुम्हारे घर में जॉइंट फैमिली, मामा बुआ फूफा सब मिला के 50 लोग तो होंगे ही, ठीक है। 50 लोगों में किसका बर्थडे कब है, बड़ी कॉमन चीज है ना, याद कर डालो, ठीक है। क्यों याद करना है, किसी के बर्थडे से आपको क्या लेना देना है, इससे आपकी मेमोरी शार्प हो रही है। कहते हैं ना, देखो अभी मेरे को अगर बाइसेप बनाना है तो जो क्या बोलते हैं, डंबल बोलते हैं ना, डंबल को उठाना पड़ेगा ना। Yes, sir. डंबल को क्यों उठाते हैं, Because I try to how much I can wear the left प्रेशर, pressure. Yes. ठीक है। हम क्या करते हैं, डंबल उठा के यही तो करते हैं ना, अपने डंबल से अपने क्या बोलते हैं बाइसेप्स पे प्रेशर देते हैं। Yes. whenever you just pressure for anything that give you the benefits that happen with you right now. How many cities in Haryana? I don't know, sir. Who's the CM of Haryana? I don't remember, sir. And what is the capital of Haryana? Chandigarh, sir. चलो कम से कम एक चीज तो पता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन। सोचो हमारी मेमोरी कितनी वीक हो गई है। ऐसा नहीं होगा कि एक तो हरियाणा में जहाँ तक कि बीजेपी की गवर्नमेंट होगी, Yes, sir. ठीक है, बीजेपी वाले देखते हो पूरा पैसा तो एडवर्टाइजमेंट पे ही डालते हैं वो, तो बाहर निकलते होगे तो बोर्ड ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता है। Sir, I know, sir, but I don't remember his name. यस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी मेमोरीज को लूज कर रहे हो, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड योर मोबाइल फोन, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे हम सब। क्यों, क्योंकि ये हमारी मेमोरी को किल करता है, हमारे फोकस को। आप रील चलाते हो, एक रील के बाद दूसरा रील आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा रील आ जाता है, फोकस तो है ही नहीं ना, Yes. ठीक है। याद करो कि 1.5 घंटे का वीडियो कौन सा देखा है तुमने रिसेंटली, ठीक है, बहुत लेस, एक आंख दो ठो देखा होगा तो देखा होगा। 1.5 घंटे की वीडियो देखने की हमारी औकात ही खत्म हो गई, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू ओनली, इट्स अबाउट एवरीवन, ओके, इट्स अबाउट योर फ्यूचर, कि आप रील देखना बंद कर दो। अदरवाइज आप देखोगे कि कुछ दिन बाद आपकी रियल लाइफ रील की तरह हो जाएगी, और वो रील वो वाली नहीं जो अच्छी वाली होती है, निगेटिव वाली हो जाएगी, ठीक है। सो ट्राई टू अवॉइड इस। बुरा लग सकता है, हो सकता है किसी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद हो कि ये रील देखना, वो रील देखना, ये रील बनाना, और मत बनाओ रील। मैं भी बनाता हूँ, बट मैं बहुत फोर्स से बनाता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। प्लस मेरे रील जो होंगे अच्छे ही होंगे, मैं फर्जी रील्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो कुल मिला के अटेंशन को ख़त्म कर रहे हो आप लोग अपने, ठीक है। अब देखो मैं बात करूँ अभी कि क्या बोलते हैं, रेरा का रूल्स जो है पढ़ाया मैंने क्लास में 4-5 बार एक्सप्लेन किया है। Yes. व्हेन आई आस्क कि इस व्हेन इट पास इन द लोकसभा, ठीक है, अब तुमको नहीं याद होगा। 10 March, sir. 10 March, लोकसभा 2017. लोकसभा 15 March. श्योर, 15 May, I think, sir. 15 May 2017. 2017। अब देख लो तुम्हारा अटेंशन कितना अच्छा है, 2017 में कर रहे हो, 4 दिन पुराना टॉपिक है, ठीक है। तो ये मतलब समझ जाओ कि ये हटा दो, ठीक है, 2016 में हुआ था, ठीक है। Yes. तो ये क्यों हो रहा है, यही रीजन हो रहा है कि आपका अटेंशन, आपको पता है कितने ढेर सारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, आप फेसबुक में कितने इंजीनियर लगते हैं, इंस्टाग्राम में कितने इंजीनियर लग रहे हैं पीछे, कर क्या रहे हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के अलावा, ठीक है। Yes. अवॉइड करो इनको, ठीक है। Yes, sir. चीजों को ऐसे यूज करो कि वो आपके बेनिफिट के लिए हो, ठीक है, आपके लॉस के लिए ना हो, नहीं तो सबका Right now, sir, I am not use social media like a Facebook, Instagram, but sometime I spend in YouTube. Then I realize I watch one to short video. That's after some time I realize I spent 1 hour, 1.5 hours. यस। Lost my time. सी, आप अपने पैसे का बजट रखते हो, कितना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, यहाँ इतना खर्चा किया, जो बड़े बड़े खर्च होते हैं जनरली जो समझदार लोग होते हैं करते हैं, राइट। लेकिन जो पैसे से भी ज्यादा वैल्यूमान है वो क्या है, My time, sir. टाइम है, ठीक है। अगर मेरा 100 रुपए खर्च हो जाए या फिर खो जाए, मैं उसको खोजते बैठूं 100 रुपए को, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक। क्यों, कि उसको खोजने में जो मेरा आधा घंटा जाएगा, इफ आई स्पेंड दैट हाफ आवर्स एनीवेयर एल्स, आई कैन अर्न मोर देन द थाउजेंड्स,
मीन्स व्हाट? मीन्स टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन योर मनी। और जो ज्यादा वैल्यूएबल है उसको हम लोग हिसाब नहीं कर रहे। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं ऑफिस में जब मैं काम कर रहा था तो मैं एक दिन देखा, तो मैं जनरली क्या करता कि मेरी आज भी यही आदत है और हमेशा से ये आदत है कि मेरे साथ कोई गया, ठीक है, क्या खाना, पोहा खाना, सबको खिला दूंगा, ठीक है, क्या खाना, समोसा, मतलब मेरे को नाश्ता कराने में बड़ा मजा आता है सब, ठीक है, नाश्ता चाय ये सब। तो मैं ऐसे जस्ट नाश्ता वास्ता करके आ रहा था अपने कैंटीन से ऑफिस के। और जनरली मैं क्या करता था कि पूरे महीने का एक साथ में उनको पैसा दे देता था, कितना होता है वो लिख लेते थे। आ रहा था तो एक लड़का था, ठीक है, और ही वाज द लाइक जस्ट राइटिंग इन देयर मोबाइल फोन कि क्या बोलते हैं, इतने रुपए का ये खाया, 20 रुपए का, 10 रुपए का ये खाया, 20 रुपए का ये खाया, ठीक है। मैं उसको देखा, मैं पहली बार देखा, ठीक है, मुझे वो चीज़ अच्छी भी लगी, बहुत बुरी भी लगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत सिली चीज पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, Yes. ठीक है। लिखो, मैं लिखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ये लिखो ना, 1 लाख रुपए का ये किया, 50,000 का ये किया, थोड़ा उसका भी लेवल हो ना, ठीक है, क्योंकि आप एक अर्निंग कर रहे हो 50,000 60,000 रुपए, तो आपका लेवल ये नहीं है कि आप 10 रुपए को कैलकुलेट करो। हम्म, Yes, sir. ठीक है, करना है कैलकुलेट तो टाइम को कैलकुलेट करो कि कहाँ स्पेंड किया। देखो 2 घंटा तुम बोलते हो ना, वो 2 घंटा कहाँ खराब हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करो कि 2 घंटा हमने बर्बाद कर दिया अपना, किसके चक्कर में, ठीक है, दो चार ठो जो अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं रील्स थे, वो रील्स देख के, जिससे कोई भी अर्निंग नहीं हुई, आपकी माइंड की अर्निंग नहीं हुई, आपके शरीर की अर्निंग नहीं हुई, After ठीक है। watching the reels, sir, 1 hour, my mind is overheated, and after यस that, I'm not study in my mind doing a study. यस, ट्राई टू अवॉइड, ठीक है। अगर अपने आप को बनाना है, एक चीज कर दो कि रील ही मत देखो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे नहीं हो, मत रहो, कुछ नहीं है इंस्टाग्राम, Yes, sir. ठीक है। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं, और ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हमारे टाइम अटेंशन को इतना ज़्यादा बर्बाद कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ ना कि अभी हम लोग को जो मेमोरी बचपन में होती थी वो मेमोरी अभी नहीं है, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई टू फोर्स माई सेल्फ, ठीक है, मैं याद रखना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आज मेरे परिवार में जैसे जैसे डिस्कस कर रहा था, मेरे परिवार में लगभग मेरा फैमिली बड़ा है, लगभग 150 लोग हैं, बट आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट ऑल द पर्सन्स, ठीक है, ओनली 50 पर्सन्स का नाम मैं जानता हूँ, बाकी 100 को क्यों नहीं जानता हूँ? क्योंकि मैं अपने माइंड को उस लेवल पे ले ही नहीं जा रहा हूँ, राइट। तो ट्राई टू फोर्स योर माइंड। ओके, थैंक यू सो मच संजय, जस्ट ट्राई टू इनहेंस, ओके, छोटी छोटी चीज़ों Thank को you so ध्यान much, sir. रखो। ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू तब होगा जब आज से रील देखना बंद कर दोगे, तब रियल थैंक यू होगा। Okay, sir. Of course, sir. I will try. ओके, या देखो, आई विल ट्राई, ट्राई नहीं होता, कमिटमेंट Okay, होता sir. I commitment. है। I am यस not. yes, you can watch the good things, I'm not saying anything, you can watch the good things, try to avoid these silly things, you are engineer, this is not your level to watch that silly things। कोई डांस कर रहा है, कोई जबरदस्ती किसी का म्यूजिक, किसी की भाषा, वो मुंह बना रहे हैं, हम उनके मुंह बनाने में अपना 1 मिनट क्यों वेस्ट करें यार, है ना? Yes. इट्स नॉट आवर लेवल। ओके, मिस्टर साहिल, मिस्टर साहिल पाटिल is, I think is not well, no, okay, let's come with Mr. Rusikesh Suryavanshi, then Rusikesh Ore. Rusikesh Suryavanshi, audible now? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Oh, sir. good morning, good morning. Rusikesh, tell me about your 5 good habits and 3 bad habits. 5 good habits. I am a quick learner, Very good. and I can survive in any condition on you can say on site, and I can this may be a good habit or and bad habit altogether. I can't say no to anyone. Even if I can realize that this thing will harm me, but I can't say no. And I'm passionate. And another good or bad thing is if I have to do some work, then until I start the work, it is going to be that I'm lazy. But once I start the work, I stop after completing it. Very good, very good. How many Yes, sir. lectures you watch? I watched up to 7, sir. Up to 7 lecture you watch. Okay, only 7? Yes, Why? sir. I'm trying to watch more,
but simultaneously I am watching the lecture and trying to practice it on AutoCAD actually. But you are So not in job, that's, na? yes, I am in job. You are in job, so you Yeah, most time will get. that's why I'm lagging behind. Okay, but try to be with the class, okay? Otherwise, Yeah, yes, sir. when it Yeah, will be stored, it will be a problem for you. Okay. yeah, yeah, sir. Yeah. Okay, Mr. Rishikesh, so what's your current job profile? My current job profile is junior site engineer. Okay, what you like about your current company and what you don't like about your current company? There are many things I like about my company right now, but I don't like that they don't have a PF system actually, and likewise, Mediclaim is not there. So that are the two things I don't like. Hmm. Apart from that, what I like is the timing is uh, good, work environment is good. Uh, Another thing that don't like it, that the salary is a bit low. Okay, so you want to enhance your salary. What's Yeah, your salary? but Yeah. that will do. Okay. That will do. What's your salary expectations? My salary expectation at least 28,000 per month. 20. Okay. Yeah, right Uh, now I'm getting 20. 20. So you Yeah. can say in the like what's your CTC? CTC 2.5, I guess. I did not calculate. 12 2.4. CTC. Yeah, What is CTC? I didn't calculate. Per annum, What is CTC? I don't know, sir. Lump form. I don't know lump form, sir. Cost to company. Cost to Okay. company. Yeah, Yeah. Try yeah. to recall and Thank you. say to companies in the professional way कि my current CTC is 2.4. I just want more Yeah, than that. Try to be yeah. flexible. Okay. Flexibility everyone like. Okay, Yes. so you can just say कि more than 2.4 is my salary expectations. Maybe they can give you the 3.6, maybe they can give you the Okay. 3, maybe they can give you the 4. Okay, so Yeah. it's differ. You're not going to get the less than that. Okay, Yeah. so right way is you can just say more than 2.5, 2.4 because my current CTC is 2.4. Okay. Okay. We got. But I mean, it is not good to say them the what I can say A range word word or range. no, you can say the range, but the better option if you are doing the job, okay, if you are in the Yeah. job, you can say more than the current salary. Okay. That would be Okay, right. yeah, That would be but the right answer. Yeah. yes, if you're not in job, then yeah, the answer is a change. Then you can say ki as per industry standard. Don't Yeah. ask the money. Why? Because if you are new in industries, you need to Okay. learn. They are going to provide you trainings. Okay. Yes. So Yes. first Yes. of all, they just want to see in your face the learning. आप सीखने में इंटरेस्टेड हो क्या? अगर वो नहीं दिखा, if you're very talented, doesn't matter for them. Why? Okay. Because their rules and regulations are the change. You need to learn that. Okay, तो rigid नहीं, flexible बनना है. So you can just say कि okay, I want this. And second thing, as per industry standard. Suppose sometimes they are the or they said कि you can just tell me in the numbers. Yeah. Okay, then you just try to give them the right numbers, but always in range. Okay, Okay. if that company is a mid-level company or like MNC's company or a small scale company, if it's called a small scale company, you can say in the month also ki 15 to 20,000. Okay, if that is medium level company, you can just say ki, 2.4 to 3 lakhs. Okay, Okay. if that company is MNCs, you can say 3 to 4 lakhs, between 3 to 4 lakhs, 3 to 3.6 to 4.6 lakh, like this type of flexibilities. ठीक है, कभी कभी Okay. ऐसा होता है कंपनी का बजट इतना ही है और आपने थोड़ा सा Hmm. ज्यादा मांगा हुआ है. अब वो क्या होता है Yeah. कि अगर देखो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन जो है, अगर मैं तो बोलूँ कि जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए मान लो भी मेरे पास एक ईयरफोन है, ठीक है, कौन सी कंपनी का है, बोल्ट कंपनी का, ठीक है, मुझे अगर ये ईयरफोन जो है ये 1499 रुपए का होगा, आई थिंक, पता नहीं, ठीक है, चौदह सौ Hmm. निन्यानवे रुपए का अगर ये है, ठीक है, और अगर ये मुझे
मेरी उम्मीद है मैं इसको बेच रहा हूँ, मैं इसका ऑनर हूँ, ठीक है। और अगर इसको 1499 की जगह मैंने इसको थोड़ा सा महंगा बेच दिया, मतलब 1500 का बेच दिया, 1 ही रुपए का बेनिफिट हुआ ना, बट मुझे Hmm. थोड़ी सी ज्यादा हैप्पीनेस होगी। Yeah. ओके, Yeah. इफ यू Yeah. गॉट समथिंग कि ये मेरे माय टारगेट इज दिस, ठीक है, और वो नहीं मिलता है तो आपको दुख होता है, ठीक है। आपको Yeah. सैलरी का आपका टारगेट है कि मुझे क्या बोलते हैं 15,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए, और जैसे ही आपको 14 मिलेगा आप हैप्पी नहीं रहोगे, बट 15 की जगह 15.5 मिलेगा, यू फील हैप्पी। डिफरेंस इज Very. नथिंग, बट योर Yeah. ब्रेन इज वर्किंग ऑन दैट कि ओके डोपामिन रिलीज कब होगा, हाईएस्ट फॉर्म के लिए, ठीक है। Okay. सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, डोपामिन रिलीज होने के लिए। व्हाई यू वांट टू गेट द गुड पैकेज, डोपामिन रिलीज होने के लिए। कैसे, यू वांट टू गेट द गुड लाइफस्टाइल, क्यों, डोपामिन रिलीज करने के लिए। यू वांट टू गेट द गुड फूड, क्यों, डोपामिन रिलीज करने के लिए। यू वांट टू गेट द मैरी विथ लाइक गुड गर्ल, व्हाई, डोपामिन रिलीज करने के लिए। जो सब कुछ भी रिलीज है किसकी वजह से, डोपामिन की वजह से, राइट। यार मेरा प्रवचन Yes. हो जाता है, सॉरी यार, मेरे हंसी आ जाती है, No, sir. क्या No, क्या। sir. ओके, That's a good information actually. यस, okay. Mr. Rushikesh, just tell me the technicals. What is the cover uses? Means why we provide the cover? Uh, cover is provided in the structural members like footing, column, beams, raft, also and slab also. Cover that is cover is provided so that basically we provide cover to the steel present in the structural member. So uh, that is to prevent the anything we can say water or air to reach till steel in the structural member, because the because steel properties are if it gets in contact with the air or water, it gets rusted, and Prevent it from gets corrosion. You can use the word corrosion. corrosion. Yeah. Okay. Yeah, prevent to What is rusting. the density of steel? Last question. What is the density of steel? Is 7850 kg per meter cube. Sure. Yeah, In kilonewton. I don't know, sorry. I don't know in kilonewtons, sir, actually. ओके, ट्राई टू नो एंड द वीकनेस Yeah. व्हाट आई गॉट। देखो अभी इसने वीडियो कॉलिंग किया गाइस, तो इससे बेनिफिट ज्यादा हुआ इसको। क्यों, ये क्या कर रहा था, जब कोई क्वेश्चन में पूछ रहा था तो इधर 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 ऐसे ज्यादा तुम्हारा हो रहा था, तो इसे क्या Yeah. बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट Avoiding, एंड you are avoiding eye contact. यस, Yeah. Yeah. अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, ठीक है। बट आई कांटेक्ट में भी कंटिन्यू नहीं घूरना है, ठीक है। वो बोलेगा यार ये तो घूर रहे हैं, घूरना भी Yeah. नहीं, ठीक है। Yeah. लेकिन एटलीस्ट 15 to 20 second, 30 second you can just focus on the person, and then you can just like see other and then again focus, okay। Yeah. तुम्हारा फोकस Yeah. खराब था, जो मुझे अभी आज तुम्हारे इस लाइक कैमरे ऑन करने के बाद पता चला, ठीक है। Yes, sir. ओके, एंड बट यू आर About कॉन्फिडेंट about वो, last यस। yes, sir. About last mock interview, you didn't rate my performance. ओके, So I मुझे want लास्ट that also. तुमको खुद बताना पड़ेगा कि लास्ट क्या था। आज का 4 है। लास्ट में सर सेल्फ इंट्रोडक्शन ही था बस. तो वो उसमें ज्यादा जज नहीं कर सकते ना। इंट्रोडक्शन वाज Yeah. ट्राइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन इज ओके फॉर यू, ओके। Yeah, sir. Can I discuss with the yesterday's topic, TDR? Not right now, just wait and finish Okay. first, then Okay. we'll discuss, okay? Okay. Thank Okay, you, sir. Mr. Rushikesh Ore. Good morning, sir. Good morning. Yes, Rushikesh, introduce yourself. Good morning, sir. I am Rishikesh Sunilavare. I am from Kherwadi. I had completed diploma in civil engineering at Kikak Polytechnic, Chanduri, in 2021, and nowadays I am doing job at J Developers as a junior site engineer. Okay, and also in the internship you're not mentioned, you're mentioned in your resume. Yes, sir. So just explain about your internship, what you're doing there. In internship, what you're learning there? Sir, currently I am pursuing BIM professional course from Unix Civil, and this course includes AutoCAD 2D, 3D, Revit architecture, Revit structure, Revit MEP Naviswork,
BIM 360 software. Hmm. Uh, Okay. What is the use of Revit software? uh, What is the use of Revit? Simple. Multidiscipline software, sir, and Revit is building information modeling software. What are the file formats of Revit? .rvt, dot rft. Hmm. What you learn in last 1 week? Last 1 week. Rishikesh. Last 1 week, sir. What you learn in last 1 week? Rera. I don't know. You just know. No? Can you just explain? ऋषिकेश गड़बड़ कर रहे हो यार तुमको कब से मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन अच्छी करो। ठीक है, तुम्हारा देखो अभी ये लास्ट स्टेज है, हैं? मुझे गुस्सा भी आता है ना। ठीक है, कितना पेशेंस रखा गया है। फोकस करो, ठीक है, फोकस करो। ऐसे नहीं होगा दोस्त। तुमको एक बैच का चांस मिला, दूसरे बैच का चांस, अभी ये लास्ट चांस है ना, बराबर है ना। तो ऐसा मत करो। तुम्हारा मैं चाहता हूँ तुम्हारा फ्यूचर बने, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ, है ना। मुझे क्या सर, पड़ा है। कम्युनिकेशन का ही हो जाता है, मतलब तुम करो ना कम्युनिकेशन को अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। करो, स्टार्ट कर दो। ठीक है सर। ठीक है, ये ठीक है। तो लास्ट टाइम भी तुमने बोला था। हाँ सर। ठीक है, क्या किया कम्युनिकेशन में। तुम कम्युनिकेशन की क्लासेस करते हो। कर मतलब किया था सर, शुरुआत में हुआ था मेरे से। बाद में क्या हुआ सर, थोड़ा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया मेरा, मतलब कभी बट इससे रहता था, नुकसान कभी कितना होने वाला है, इसका रिजल्ट पता है। इतना हाँ सर। मेहनत सब पानी में चला जाएगा ना। कौन सी मैडम पढ़ा रही थी। मौर्य मैडम। मौर्य मैडम पढ़ा रही थी। अभी बैच तो उनकी खत्म होने वाली है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, वो देखो कितनी इंटेलिजेंट है वो। ठीक है, वो हाँ। आईएएस की क्या बोलते हैं प्रिपरेशन कराती है। ठीक है, और खुद करती है। तो मतलब कि अब तुमको इतना अच्छा चांस मिला है ना। यस सर। ठीक है, उनकी न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाली है 10 अगस्त से। जिसका भी गाइस कम्युनिकेशन वीक है, ज्वाइन कर लेना। बहुत अच्छे से आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो दुनिया का कोई टीचर पढ़ा लो, कुछ नहीं होगा, है ना। सही सर। तो ऐसा मैडम भी यही बोलते थे मुझे। हाँ, लेकिन तुमने उनका भी नहीं सुना, हमारा भी नहीं सुना, और अरे सब खराब कर सुना, दिया। मतलब सर क्या होता था, हाँ, मतलब आपको भी मालूम है सर। मुझे सब मालूम है। हाँ। लेकिन अभी रिजल्ट तो हमें करना पड़ेगा ना दोस्त। यस सर। रिजल्ट तो करना पड़ेगा ना। दुनिया एक्सक्यूज नहीं मांगती ना, और पीछे का हार्डवर्क नहीं देखना चाहती ना, वो तो रिजल्ट मांगती है ना। मैं रिजल्ट देखूंगा। यस सर। ठीक है, हाउ यू विल डू इज योर प्रॉब्लम, हाउ विल मैनेज इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, और देखो ये बहुत कम दुनिया में लोग होते हैं जो तो जिनकी तुम्हारी परवाह होती है। एक तुम्हारे बराबर। मेंटर होते हैं, दूसरे माँ बाप होते हैं, तीसरे कहेंगे भाड़ में जाओ, हमारे किया जाता है ना। सही है सर। ठीक है, वर्क ऑन दैट। कोशिश करो कि क्या बोलते हैं इम्प्रूव करो, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुम्हारा कम्युनिकेशन वीक था, इस समय भी अब कम्युनिकेशन तुम्हारा वीक है। ठीक है, तुम बात करना, हम तुम्हारी लेटेस्ट बैच में तुम्हारा करवा देंगे। जो अभी लेटेस्ट बैच रिया मैडम का चल रहा है उसमें करवा दूंगा, लेकिन इम्प्रूव करो। ठीक है। चले सर, उनका टाइम क्या रहेगा, मतलब मॉर्निंग में रहेगा कि? नहीं नहीं, इवनिंग में रहेगा। आई थिंक, पता नहीं मुझे, 9 बजे चलता है अभी बैच चल रहा है, मुझे याद नहीं कितने बजे है, लेकिन 9 बजे के आसपास है शायद हम लोग का बैच। 9 बजे। हाँ, 9 बजे होगा या फिर 8 बजे होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं क्रॉस चेक करके पूछूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलेगा। ओके, ऋतुजा। Oh, good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
Arjun, explain, introduce about yourself. Okay, sir. My name is Pooja Jagdish Patel. I done my schooling from Jammu Karnataka High School, which is SSC board. Then I'm done my diploma from GPM, Government Polytechnic Mumbai, which is autonomous, and I done my BE from MGM, which is in Kamote. Right now, I am taking training for my BIM just to improve my skill sets, and that's all. Thank you. Okay, so you're looking after completing this internship, you're looking for the job in BIM, right? Yeah, yes, sir. Why want to do job in BIM? Sir, the main thing is that I want a desk job or something related to office. So I think the BIM is the one of kind of office job or desk job. So that's why I'm trying to do this in training. So you can do the structure engineering jobs, estimation jobs. That all things are based on the desktop. But this BIM, actually I'm like collecting information about BIM from last 2 3 months, and I found it my interesting. So I Yes. thought I will do that thing only. Yes. Don't say कि I just want the desktop job. डेस्कटॉप जॉब में तो लोग होमगार्ड वाला भी जॉब डेस्कटॉप का होता है, काउंटर पे बैठने वाला भी जॉब डेस्कटॉप, कलेक्शन वाला जॉब भी डेस्कटॉप. दिस इज नॉट द सफिशिएंट, राइट? यू शुड Okay, से sir. कि आई फील interest in that after searching the lots of datas, after searching the lots of videos. I feel very much interested in that myself, and that's why I just want to make my career in. So interest, if your interest is in something, people will understand कि आप अच्छे से काम करोगे, right? Okay, 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 what's sir. your hobby? My hobby is writing poem and reading books. Okay, so last time which poem you write? That was like last year actually. Yeah, last Not year. last year. Last year. After that, I just stopped doing all this stuff because my exams were there and then everything. This is not your hobby. This is the Uh, social influence. Not social influencer actually. Actually, I took some breaks from all those stuff because they were like little distracting me. That's why. Okay, actually that create you, not distracting you. That's Okay. create you. It's up to your brain कि how you taking that. Okay, when you just Okay. imagine something, then only you can write the words, right? So Yes. Yes. imagination is the word which is very useful for the BIM. Okay. Okay, so Okay. try to be continue with your hobbies also all the time, because office always feel you the refresh. Okay, Okay. what are you Okay. doing right now for your refreshment? Right now, uh, uh, like like for to be honest, nothing. To honest nothings. To be So if you honest, not nothing. refresh yourself, so how can you do the next work freshly? Exactly, sir. You need to be refreshed ना, like Yes. गाड़ी Yes. को खड़ी करते हो कि नहीं खड़ी करते हो? जब गाड़ी चलाते हो तो फिर लगता है ना कि भाई खड़ी हाँ, कर दे, थोड़ा रेस्ट कर लेना. हाँ लगता है. ओके, एंड सर्विस कराने जाते हो उसको, क्यों? रिफ्रेश ही तो करवाते हो उसको. हाँ, एंड बट वी आर नॉट डूइंग आवर सेल्फ द रिफ्रेशमेंट, राइट? exactly. I will try to do it from यस. today onwards. ओके, what is the use of dynamic input command in AutoCAD? Damn it. So I don't know. What is the shortcut key for the ortho command? Effect. Effect, sir. F8. Okay. uh what are the types of spline? What's it? Spline, SPLIN. Sir, I don't know. Okay, what is the shortcut key for construction line command? CH. CH. Just trying to talk about the C in construction. S, no. Okay, and Sorry, sorry, sir. It's X. It's X. X. X, XL, XL. Excel. Okay, in last 1 week, what you prepare? Last 1 week. Hmm. Last 1 week. I like last 1 week. Like in terms of like this course or Or anything, what you prepare? uh, can you just select what exactly so I can just answer for what? I just want how you utilize your last 1 week.
Uh, my last one is not that productive because I have some other works to do, but compared to my career, it was not that productive. Just used to see some videos, not like properly, just for overview and some assignments. That's all. Okay. So what the overviews you got like related to civil? Uh, I just forgot one thing that if I really worked hard for it, then I can get it. It is just on me that how consistent I can be to just do this stuff. So I will try to be more consistent and interested towards this from this upcoming week. Okay, okay. Let's see what's your next week. ठीक है, why I'm asking this because ऐसा लग रहा होगा ना परेशान हो गए यार. ठीक है, तो ऐसा जरूरी क्यों है? जरूरी ये है कि खुद को हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. आस्क अबाउट योर सेल्फ कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, है ना. ठीक है, एंड ट्राई टू कंट्रोल योर जो आप कहते हैं ना, एक होता है मन होता है, एक होता है बुद्धि. ठीक है, बुद्धि Uh, ऑलवेज ऑलवेज सेड यू ट्राई टू ग्रो. आई जस्ट वांट टू किल अप, आई जस्ट वांट टू डू दिस मच बिगर, राइट. ये बुद्धि कहता है ना हमेशा. बट मन yes, क्या yes. करता है? रिलैक्स कर Allow लेते me. हैं. ठीक है, टाइम पास कर लेते हैं. ठीक है, इधर उधर कर लेते हैं. मन हमेशा आपको खींचता है. ठीक है, क्यों? ठीक है, अभी इसके बहुत बड़ा एक साइंस है इसके पीछे. क्योंकि जब मन है वो होता है आत्मा से. ठीक है, तो मन कहता है कि हमें बॉडी से क्या लेना देना है, ये भाड़ में जाए, इसको इसका ग्रोथ भी हो गया तो हमारा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना. और बुद्धि क्या कहता है? अपनी को बढ़ाना है, अपनी इस बॉडी को बढ़ाना है. बुद्धि जो होती है आपकी बॉडी को बढ़ाती है, मन जो है वो आत्मा को बढ़ाती है. ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं कि हम नहीं करने देंगे तुमको. और इसी में जिसने कंट्रोल कर लिया अपने मन को, ठीक है, फिर अब क्या है, जब मन कंट्रोल हो गया, मन गुलाम अगर हो गया बॉडी का ना, तो ग्रो इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि सोचो ही मत. करो, इस पे सोचना. Okay, sir. ओके. Okay, sir. नाउ, Thank you, sir. ओके जी, मोस्ट वेलकम. नाउ मिस्टर प्रथमेश, प्रथमेश दियोकर. Yes, sir. Hello. यस प्रथमेश. मिस्टर प्रथमेश. Sir, it's Devkar, sir. ओके, थैंक यू सो मच. देवकर, नॉट दियोकर, Ah, इट्स yes. देवकर. Devkar. Okay, thank you for correcting me. Mr. Yes. Prathamesh Diokar, not Devkar, sorry, Mr. Prathamesh Yeah. Devkar, what you achieve in your career, biggest achievements of your career till now? Sir, my Bachelor of Degree in Civil Engineering. Very good. So how much percentage you got in that college? Sir, CGPA I got 8.5, Very good. like overall. Okay. Which one was your favorite subject? Soil, sir. Soil was your favorite subject. Okay. Yes. What is SBC? Huh? What is SBC? This is, sir, bearing capacity, soil bearing capacity. Soil bearing capacity. Okay. Okay. Last time I asked you one question. You remember that? Yes, sir. Solid or liquid. Difference between solid or liquid. Explain. Sir, solid is a rigid structure. Liquid does not rigid. Solid is what do I say? Solid have volume and shape. Liquid have volume but does not have shape. Exactly. If I ask something, if you don't know, that doesn't matter. But after you don't know and next time you not research. improve, then that is bad habit, right? Yes, sir. Yes. Very good, very good. You just do that, so I'll just like that. Okay, which IS code we use for wind analysis? Wind analysis. Yeah. How much cover we provide in column? Sir, I don't know practical knowledge, sir. Column cover is a very basic thing. 15 15, 10, 5, 2. 15 mm, sir. 15 mm or centimeter? Mm. 15 mm for the column. And for the slab? Okay, what's your pass out year? Recently, sir, 2023. 2023. This is very common. And how many IS code you learn in that your whole 4 years? Or use in that 4 years? Sir, 2, sir. Which one? IS 456 2002.
an IS 10262 2019 latest version. For what? Earthquake engineering. Earthquake. Which one you said? IS 10262. 10262 for earthquake. Yes, sir. Yes. And there was no any subjects related to steel. Yes, sir. 456 2002. 456 for what? Steel. Sir. Concrete structure, design of concrete structure. I'm talking about steel structure. Sir, I don't recall. There was a subject, na, steel structure. Yes. Okay. And who was the like which writer book you prefer for the steel structure? Do you remember? No, sir. Just class notes. Class notes you just follow for the for all subject or any subject you like? Okay, I just Yes. all subject. Class notes. Yes. Class notes only you follow. That is like they provide you the printed notes or you just write by yourself? Yes, sir. Printed notes, but in steel structures, a lot of them are problems. Okay. So in class they solve problem. Okay. So which were the universities? Sir, PASU, sir. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, सोलापूर युनिव्हर्सिटी. Okay, Solapur University was there. Okay. Prathamesh, what's your salary expectations? Sir, as a fresher, I don't expect much. But 2 lakh minimum, sir, annual. Annual 2 lakh minimum you want, but Yes, sir. you don't have any expectations for that. Okay. No, sir. Okay, what was your project in college? Sir, stabilization of soil using plastic waste. Stabilization of soil using plastic waste. Okay, bottles and all, right? Yes, plastic bottle. Okay. What do you understand by cambering? Cambering. Camber. Camber. No, sir, I don't. Camber. Okay. What's your strength? Sir, my strength is like I go very good in designing. Like I assume like structures in 3D, 2D. My visualization is good. So I don't I don't have problem with isometric drawings. Some of them are silly drawings by mistake by me. Okay, great. Thank you so much, Mr. Prathamesh. This was nice to talk. Thank you, sir. Okay. Thank you. Okay. Uma Bharti, ready for the mock? Uma, audible now? Okay, I think she is not ready for right now. Okay. Yes. Hello. Yes, Uma. Yes, sir. Ready for mock? Yes, sir. Right now you're doing very tough job because you're managing your office, right? And your Yes, sir. training also. So Yes, you're doing very good job. But what qualities you are spending, that is matters. So what you learn in last 1 week? Yes, sir. I have learned from our classes regarding RERA, building bylaws, and some AutoCAD commands. Okay. Like? Okay. Like dimension, array, scale, arc, regarding hatch, then dimension style, donut, revision cloud, and recently asymmetric view. Very nice. You learn the many things in last 1 week. Okay. So what is the use of revision cloud? So revision cloud is the remark we can give in a drawing for further communication with the other parties. It's easy to communicate. Easy to communicate. Okay. And day before, like right now you're doing working on any project? Yes, sir. Okay. What is the project? Sir, design of complex shopping complex in Arunachal Pradesh. Okay. You're just designing the shopping complex. In which zone? Seismic zone?
So zone 5. So recently revision um, given by as 2000, sorry, 1893, Yes, 2020. 20. The zone, and zone is changed before according to 1890 2016 that was zone 5 and now that was zone 6 for Uh, Arunachal Pradesh. okay. What are the revisions updates in latest IS code? Sir, I didn't that much deep in that. Okay, but you need to know you are the Yes, sir. working on the related to that. Okay. Yes, So right now you just use the layers also, right? yes, sir. Okay, in layers there is a freeze and on off. What is the difference between both? Sorry, sir. Okay. I In didn't watch the lecture after 8. Oh yes, then that is the problem. I think that is in lecture number Yeah, 9. And yeah. okay, I just want to check how much you learn about lecture up to 8. Just tell me one command used, that very simple command, reassociate command in AutoCAD dimensions. Reassociate. I'm asking, just trying to check your focus about the lectures. Yes, sir. This is not useful command for the industry. What is the use of oblique command? Sorry, sir. Oblique Q. Oblique view. If we work in isometric view, then it's unable to give what can I say? Unable to give dimension in proper ways. So we can use oblique for giving proper dimension. Arrow not provide the proper direction or right direction. For the right direction, we use the oblique Q command. What's your goal? So recently I'm working as a structural engineer, so I'm trying to give my best for structural engineering, and I want to see myself as a um, best structural engineer, and I'm trying for that. Okay. But you're looking for the trainings of the BIM. Yeah. So Yes, just sir. Recently means from 2017 I am working as a structural engineer in correct, practical knowledge, but correct. uh, as a 3D visualization I want to work with BIM so I can enhance my knowledge with structural engineering. Correct, correct. Okay. What is the use of crank bars in beam? Crank bars. So general crank bars provided in bottom of the beam. If there is a positive bending moment um, in middle portion, then and if we can see the beam, the low, bending moment is maximum at the center and at the near the support at top. If maximum bending and minimum bending moment at the support in bottom. If we have to manage this bending moment, then we have to provide the crank beam in middle portion of the beam at bottom at 0.7 times L. I'm just talking about the crank bar. What is the use of that? Not you define everything. Okay, that is correct. But what is the use? Okay, that is Okay. crank. That is used for the Sir, registration of the. Yeah. recently, crank bar is not in use. We have provide bent up bar, but Bent up we bars. think about the crank beam. Then it's resistance for shear Shear. Yes. Shear and negative bending moment also. bending. ठीक है, negative. Okay, Yeah, that is sir. important. Negative bending moment. Negative. Okay, ठीक है. Okay. No. So, just try to keep it up and try to get the practice and make the consistency. ठीक है. Yes, sir. Consistency maintain करोगे. I know that is the very tough if for just doing with the job and balancing the families and everything is very tough. But if you're doing, just try to do with consistency. The outcome will come in the very fabulous manners. ठीक है, पक्का Yes, sir. है. ठीक है. Chalo. Thank you so much, and you can leave because you are going for your office, right? Yes, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay. Uh, Sahil, when you're ready, just remark me, and anyone is going for the office, you can just tell me कि sir, like मेरा office से बता देना, ठीक है? Okay.
This is Chiti. Sorry about the pronounce. Is Chiti Solanke? Just pronounce your right name. It's Kshiti, sir. It's Kshiti. Chiti. Okay, this is very tough for me. Solanke. Okay, Yes. Salunki. Okay, thank you. Chiti Solanke, introduce yourself. Good morning, sir. Good My morning. name is Kshiti Sudhakar Sankhe. I'm basically from Sindhudurga. I live in Mulund. I recently graduated from Asia Institute of Technology, Thane, in the stream of civil engineering. Right now, I'm doing internship in civil, Unix Civil as a intern BIM engineer. Mm. And as a beginner, I want to gain a more knowledge and experience and gain a hand-on experience in the organization, in a good organization. And my long-term goal is to achieve a good position in the organization. Thank you. In That's which all about profile? in construction management. Construction management. Okay. So, Chiti, right now you're looking right now doing the training of AutoCAD, right? Yes. Okay. What are the important commands you know about in AutoCAD, and what are their uses? Important commands. There are like 5 commands which are AutoCAD menus, command line, then shortcuts. Yes, I Oh, just know this okay. right now. What are the modify commands? Modify tab command. Modified Modify tab command. in There are the first uh, one is mo- draw toolbars. Second one is modify tab. yeah, it contains like many commands like trim, Mm, uh, mirror, then fillet, mm, array. mm, Again, yeah, we can move our object. mm, Again, we can also copy from there. mm. Yes, I just know that much There are right many now. more. You can just try to force in your mind. Okay, what are the extra commands in that tab? So there is offset. Yes, offset, mirror, Yeah, explore. mirror, explore. Yeah. Okay. What are the types of array? There are 3 types: polar array, then rectangular array, Okay. and path array. Polar, rectangular, and path array. What is the use of array? By We can draw the same object like by typing on polar array, we can get the same object on each side, like same distance with the same distance, Same object with the same distance we can get with the help of and array. also we can change the number of columns and rows as we want. Columns and rows we can. Oh, okay. In array there is a terms levels. What is the use of levels? Levels, we can get the different levels, as we put the number, we can get according to it the Oh, levels, number of levels. okay. Suppose you're the owner of the one company, okay, and you are just going to hire some persons. What are the qualities you're going to see in that person? First of all, I will see, is he is he quick learner? Is he disciplined, honest with the organization, and if he can give his vision to the organization? I can see these all qualities first of all, Okay. and also his side by side is knowledge. Knowledge also. Okay. And what's your salary expectations? As a fresher, right now, salary is not my first expectation. I want to get more knowledge and experience, and I think yours, and also I think company it be you I think you can give the salary according to my ability and also according to the company's norms, which will fulfill my economic needs. uh, I think you're trying to say you are at the right positions. You can define the right salary for me as per my capability, Yeah, 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 yeah. right? Okay. Uh,
Jyoti, you can just explain one last question. Again, try to force your mind. What are the tools available in the draw commands? Tools available in the draw command. There is a circle, uh, construction. We can draw construction line, Hmm. uh, a simple line. Hmm. Again, arcs, different arcs. We can do hatching. Hmm. We can draw a rectangle, Hmm. polygon. Hmm. Again, so there are the lines like Spline. spline line, Hmm. spline CV, something. Correct. Yeah, so that's it. ओके, चलो। देखो अभी दिमाग को प्रेशर दिया, अच्छा लगा ना? पूरा का पूरा फोर्स हो रहा है वहां पर कि अच्छा वहां पर क्या क्या कमांड्स हो सकती हैं, राइट? तो Yes, इस sir. तरीके से हमें अपने आप को फोर्स करना है। डेफिनेटली यू आर गोइंग गुड, कीप इट अप एंड जस्ट कंटिन्यू विथ योर कंसिस्टेंसी। हाउ मेनी लेक्चर्स यू वॉच? I've watched 11, 12 lectures. 12 lectures, that's nice, very good. And you completed that plan section elevation? I just completed the plan and section. No, try to complete the elevation because now it will be add, no? Means today you're going to get new assignments, so ऐसे ऐसे Yes, करके इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा नहीं करना, फिनिश कर देना है। Okay. yes, sir. Okay, great. Now, next is Mr. Prathamesh. Prathamesh? Yes, sir. Yes. Prathamesh, what are the question Yes, I sir. asked with you in last mock? Question first, which subject I like, Hmm. and second, highest code uses in civil engineering, Huh. and about my favorite subject, Hmm. about that's all, sir. Okay. What are the IS code we use in civil engineering? IS 456 2000, IS 1893, IS 875, part Uses, you can explain 3. the uses also. Okay, IS 456 2000, it is for a simple structure reinforcement. Hmm. IS 1893 for big structures. IS 875 part 3 for wind load. Hmm. Part 4 for snow load. Part 5 for imposed load. Hmm. That's also. देखो मजा आया ना? लास्ट Yes, क्वेश्चन sir. को जाके घर पे तैयार किया तो क्या हो गया? उसकी रिवीजन हो गए पूरे के पूरे, right? Yes. That is most important. Ki whatever you just, I'm going to ask, suppose I'm going to ask today what is your course, you don't know maybe, but you need to Yes. prepare after this mock. Just tell me what is your Yes. course. Air Force is a force. mm, Applies. I don't know, sir. Hmm. That is important. What is deflection? Uh, mm, Okay. Whenever you After sir, applying load, any structure is deflect or what do we call? Mm, I'm not sure, sir. Sorry. okay, try to prepare. Okay, shear force, bending moment, Okay. deflection, moment of inertia. Chart definition, try to Mm, prepare. I'll just ask in your next interview. Yes, Okay. sir. Okay. Uh, what is the difference between one-way slab and two-way slab? Slenderness ratio, sir. For longer side divided by shorter side, Ly by Lx. If slenderness ratio is less than 2, the slab is two-way slab, and slenderness ratio is more than 2, it's a one-way slab. Any other difference? That is correct. Mm, no, sir. Okay. What you know about flat slab? No. I don't know about flat slab. Okay, I'll just explain you about the flat slab. What do you understand by objective of building bylaws? Objective, it makes a structure safe. It gives a proper ventilations. Hmm. Assure a safety for Hmm. residents people, Hmm. or mm, it may it be it, what we say, for
for a drawing purpose, early drawing. Hmm. It gives all the measurements we want. It minimum measurement that allows for by the side of safety. That's also. Okay. Thank you so much, Mr. Pratmesh. Try to prepare what I Yes, have yes, tell you. Okay, next time I'll yes, ask yes. you. Okay, great. देखो ओके माइक बंद कर देना देखो जिसके भी जो क्वेश्चन सपोज मैंने इनसे जो क्वेश्चन पूछा इफ यू डोंट नो दैट क्वेश्चन आंसर दैट डजंट मैटर ट्राई टू राइट डाउन समवेयर एंड ट्राई टू प्रिपेयर इन 1 वीक कि ओके ये क्वेश्चन सर ने पूछा था उमा से नहीं पता चला मुझे ऋषिकेश वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता था रुदुजा वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता था जब इस तरीके से तैयारी करोगे हार्डली 1 मंथ के बाद तुम्हें लगेगा यार सारे क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता है दिस इज द ट्रिक यू कैन डू वन मोर ट्रिक आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट आपके सीनियर्स से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके सब मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं कुछ नहीं करना है जो फोकस एम्प्लॉय फोकस स्टूडेंट होगा जस्ट उस इंटरव्यू को वॉच करेगा देखेगा क्या क्या नहीं आता है जस्ट लिख देगा और उनके आंसर प्रिपेयर करके बैठेगा उसको टेंशन ही नहीं होगा ठीक है क्यों क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि जॉब नहीं है जॉब नहीं है ठीक है आप सिचुएशन देखो कि आपके क्लास में कितने लोग प्रेजेंट हैं ओनली 16% जिनके अंदर ये करेज है कि मैं आया ना आए अटेंड करके ट्राई करूंगा करूंगी ठीक है दैट इज द बेस्ट थिंग बेस्ट हैबिट इन यू ठीक है बाकी लोग क्या बोलते हैं कह सकते हो ना कि मतलब गंदा वर्ड नहीं बोलूंगा बस ये बोलूंगा कि डरे हुए लोग हैं ठीक है ब्रेव नहीं है बहादुर नहीं है कुछ एक दो चार जो पर्सनल रीजंस हो सकते हैं वो डजंट मैटर भाई किसी का हेल्थ इशू है ऑल वी कैन अंडरस्टैंड बट अदर्स उनको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और उनको जॉब चाहिए पैकेज 5 लाख का चाहिए बट उनका हार्डवर्क देख लो आप किस लेवल का होता है ठीक है तो ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल पर्सन और जो फेलियर्स मिलते हैं ओके मिस्टर प्रज्ञेश is there Yeah, hello. yes Pradnesh what are the questions I asked with you in last mock In last mock, you asked about first of all intro yeah and various file type for the softwares like AutoCAD, keytabs, and because you mentioned the many softwares in your resume yeah. yeah Uh, um, about your project yeah, about my मुझे project. याद है तुम्हारा तुमको नहीं याद है अपना क्वेश्चन है Yes, ये yes. फोकस करना पड़ेगा अपने ब्रेन को देना पड़ेगा फोकस ओके okay then I just want to start with your last question what was the project just explain about your project Actually, this is my this, my last year project is about the seismic analysis. We compare the seismic analysis for the different structures in zone 3 specifically, where we have a 4 people's group for that project. We take rectangular and L-shaped building for comparative for the analysis, seismic analysis. We do the calculation manually as well and on the software by using e-tabs, and we compare and we analyze that the rectangular shape is more proper behaving in seismic zone or seismic behavior as compared to the L shape. why As per the analysis, we got that result. Rectangular is means perfect shape. why because moment of inertia Yeah. pass very easily from the rectangular type or simple shape buildings when it's go with L shape it is hard to pass the moment of inertia easily to the gravity okay that is Yeah. the most important reason always simple shape of the buildings can be high rise Yes. but if that is in complex we can't go that much high rise compared to simple shape any other difference you got in your analysis No. how you calculate the seismic pressure Sorry, sir. It's fall now. okay सेस्मिक वेट कैसे कैलकुलेट किया कॉलम का स्लैब का बीम का ठीक है वो उसका नहीं है बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल ठीक है तो वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा
कि कॉलम का कैसे वेट कैलकुलेट किया, बीम का कैसे किया, स्लैब का कैसे किया, ठीक है, सब के वेट को सेस्मिक मार्क कैसे कैलकुलेट किया, इनटू क्या किया होगा तुमने अपने उसमें। अब देखो मुझे पता है, तुमको नहीं पता, ए एच इंटू डब्ल्यू किया होगा। हाँ, ए एच yes. कैसे कैलकुलेट किया होगा, ठीक है, तो एच को कैलकुलेट करने के लिए जेड आई बाई टू आर इंटू एस आई बाई जी किया होगा। जेड क्या है, जोन है, आई क्या है, तो इसको पूरा का पूरा ए एच, पूरा का पूरा डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट कर लो। उसके बाद क्या आया, उसके बाद बेस ईयर आया होगा। अब बेस ईयर क्या है, इसके बारे में जानना चाहिए, बेस ईयर कितना आया ये जानना चाहिए, ठीक है, इसके इम्पैक्ट को कैसे कम करें। मतलब कुल मिला के आपका जो प्रोजेक्ट है, सभी लोग याद रखिए, वॉट एवर योर प्रोजेक्ट, ओके, जस्ट ट्राई टू नो द डीप नॉलेज अबाउट दैट प्रोजेक्ट। अब तुमको बताऊं कि जिस जिस प्रोजेक्ट के बारे में तुम बात कर रहे हो, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अभी मैं इसे बहुत लंबा जा सकता हूँ, बहुत लंबा जा तो तुम सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी आगे आंसर्स नहीं दे रहे हो, है ना। इसमें मोड्स होते हैं, मोड्स की वजह से होते हैं, डॉक्टेल इफेक्ट्स होता है, डॉक्टेल इफेक्ट्स की वजह से एल शेप में ज़्यादा एल शेप नहीं कर देना चाहिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें से कि सियर उसके जो होते हैं, जहाँ पर ऐसे एल शेप है ना, तो एल शेप की बिल्डिंग जो होती है, उसके कॉर्नर जो एकदम बीचों बीच जो कॉलम होगा वो फेल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग इम्पैक्ट, ठीक है। उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, डॉक्टेल मतलब होता है जैसे एल शेप है तो एल बहुत ज़्यादा ना निकल जाए, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा निकल गया तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा और कॉर्नर पर वहाँ पर स्विप करेगा, तो उसको बोलते हैं डॉक्टेल इफेक्ट। वो पूरी एक अलग रिसर्च का टॉपिक है। तो अगर ऐसा कोई आपको मिल गया तो आपको तो इंटरव्यू का कल्याण हो गया, है ना। तो इसलिए whatever your project is about everyone, it's not about the Pratnesh only, whatever your project, try to know the deep knowledge about your project, ठीक है। अब बताओ क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट से पता चलता है कि ये पर्सन को एक प्रोजेक्ट कॉलेज ने दिया था, इसने कितना डेडिकेशन से किया, और अगर इतना डेडिकेशन से किया तो ये हमारी कंपनी में आएगा तो कितना डेडिकेशन से करेगा, समझ गए, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में हर एक फ्रेशर से पूछा जाना 110% फिक्स है। अगर कोई समझदार इंटरव्यूअर है तो जरूर पूछेगा। फ्रॉम दैट दे जस्ट चेक योर हैबिट अबाउट योर प्रोजेक्ट, बिकॉज गुरुकुल में कितने प्रोजेक्ट करे उनको थोड़ी पता है, उनको तो कॉलेज का पता है ना, okay. ठीक। तो हाँ, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू द लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम you need to yes, be sure. okay, complete your about that all the information, and what are the IS code you use for that, for calculating this high rise buildings comparison, what are the IS code you use? डेड लोड के लिए क्या होगा IS 875, लाइव लोड के लिए क्या होगा IS 875 का पार्ट 2, विंड लोड की विंड नहीं था, सिस्मिक था, तो सिस्मिक के लिए कौन सा सिस्मिक के लिए यूज किया था कोड, IS 1893, ठीक है, IS 1893 यूज किया होगा। तो ये जो कोड्स हैं, ये कोड्स तुमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोड्स यूज हुए हैं ना। मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पढ़ के जाओगे ऐसे फंस जाओगे। हो गया गया मॉक, पूरा पूरा का पूरा इंटरव्यू तुम्हारा चला जाएगा वहाँ पर ना, Okay. है। ओके, मिस्टर प्रथमेश, व्हाट्स योर वीकनेस? Weakness, one weakness I observe that means if I'm decided to do any work specifically, so I'm go deep in that. So I don't remember how much time I will spend on particular task. So one weakness I observe that time management. Uh, Okay, give me an example about the your first weakness you mentioned. Sorry, can you repeat? You mentioned na, like if I started some work, I just want to go in deep, I just forget about the time, right? Yeah, Give me an example where you just do that. actually, ऐसे होता है, क्रॉस क्वेश्चन ऐसे simply, होंगे, ऐसे नहीं होगा कि तुमने बोल दिया हॉबी, माय हॉबी इज टू वॉचिंग मूवीज। कौन सी मूवी देखा भाई, ठीक है, कितने घंटे की मूवी थी भाई, कौन था डायरेक्टर, कौन था हीरो, कितने बजट की मूवी थी, कितना कलेक्शन किया, पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझ गए। यू आर द इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर को माना जाता है एक ह्यूमन होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है, नहीं पता है इंजीनियर है, ये एक्सपर्ट है, ठीक है, ये एक स्पेशल इंजीनियर है, एक स्पेशल पर्सन होता है, ठीक है। तो आपको स्पेशल पर्सन की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। चलो, ट्राई टू इम्प्रूव, नेक्स्ट टाइम yeah, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके। yes. ओके,
Now, Mr. Gaurav Patel. Yes, good morning, sir. Good morning. Good morning. Gaurav, introduce yourself. Okay, sir. Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Gaurav Kumar Patel. Basically, I am from Bihar, and but currently I live in Chandigarh. I did my graduation in BTech Civil Engineering from Punjab Technical University. Hmm. Uh, Currently, I am pursuing the BIM professional course from Unix Civil. Hmm. This course includes AutoCADs, Revit's included all architecture, structure, MEP, point clouds, Hmm. LOD, and Tekla, 3ds Max, Navisworks, we call. Hmm. And my strength is I'm a hardworking person and a quick learner, and that's all about me. Thank you, sir. Okay. What's your weakness? Sir, actually, I cannot manage my times. That's are the major weakness. But nowadays, I rectified it. Okay. What are you doing for the managing your time? Uh, uh, I have worked upon it, sir, and I have worked on the learning new things like the software, and I am working on my homework, which you that's Okay. So I just asked like what you doing for that? Means for removing this habit, you doing something? yes, sir. What? Managing the time Sorry, sir. how? Means what you Okay. doing for improvement of that weakness? Weakness is the good things, but Yes. what you doing to improve that? Oh, okay, sir. Actually, I have divided my time to doing learning a new things. Hmm. That can helps to manage my times, and that also helps to this means when I have distract, I work on the learning from new things like software, which and after my class, I have work on the homework that you have to. Okay, good. Mr. Goro, you pass out here in 2023? Yes, Okay, so in your PTU there is a function like in last semester you need to do the industrial trainings, right? yes, yes. So what you did in the industrial trainings? Actually, I did in AutoCAD's training AutoCAD and in the trainings yes, sir. from any center. Infovis Chandigarh, sir. Okay, so in last Yes. 6 months you only learn the AutoCAD in the industrial No, training. sir. Actually, in last 6 months, Yeah, we have 3 months training in software and 3 months in industrial. yes. So what you did in industrial training? Sir, actually, we did in industrial training in from Jalandhar Heights, uh, the high-rise buildings in Hamilton. Uh, actually, yes. What you learn there? Actually, the construction is started on that times, and we have seen too many things how construction is started, how site plannings and the survey work. How it That's is all. started? Tell me the steps. Okay. First of all, the starting phase of construction is site inspection, Hmm. and the second thing is surveying, and the third stage is the design preliminary stage where the design is started, Hmm. and fourth is construction is ongoing. The foundation is making, Hmm. and after that the substructure, then superstructure, Hmm. and that's Okay. And what you learn in last 3 months, which is your software training. So in that trainings, uh, what you learn? uh, we have learned about AutoCAD in making plan and elevation section, and we have also learned about the Revit architecture and 3D designing, rendering. It is Hmm. Okay. When you just go for the render, you use the render Revit software.
Yes, sir. Okay, so there is a term DPI. Yes, sir. What is DPI? Actually, we have when we are going to rendering any. Actually, we have working on G+1 building rendering. The DPI is the qualities which are using in rendering. There is 300 DPI from the base What is qualities. DPI? I'm talking about the DPI. I know that. Sorry, sir. तुमको घुमा रहे हो, ठीक है, और हमको क्या पता नहीं है, ठीक है, तो ओके, ठीक है, व्हाई जस्ट फोकस ऑन दैट, ऐसा पूछा जाएगा। Okay, ओके, okay, sir. आई नो अबाउट द पीटीयू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना। Yes, सब sir. Yes. सबको नहीं पता रहेगा ना, 6 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वहां पर। अब ये 6 मंथ बहुत हाँ होता जी, है, राइट? हाँ ये जी, हाँ सिक्स जी, मंथ हाँ में जी। सिर्फ गेड़िया नहीं मारना होता है, ठीक है, वहां पर हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, गेड़िया मारना मतलब Actually, sir, हाँ। in the past 6 months, we have working as a design engineer in SPP, sewage treatment plant. ओके, वेयर? In Chandigarh, sir. Gurukul, sir. Sorry. जीराकुल, okay, Yes, sir. in Jirapur you working there for any company? Yes, sir. Sai Global Nature Care. साई ग्लोबल, यस यस यस, आई नो, गॉट इट। तो वहां पर तुम अभी क्या प्लानिंग वगैरह कर रहे हो? No, sir. Actually, I quit the job ओके, नो इशू, recently, sir. ओके, whenever you just want to take one bigger steps you need to go one back Yes, step sir. and then you can forward. ओके, Yes, ट्राई टू जस्ट कंप्लीट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अभी मैं और क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बट और लोग भी है ना, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तुमने और क्या किया था। ओके, और okay, डीप sir. में जाओ, जिससे कि एकदम प्रॉपर नॉलेज रहे कि हमने 6 मंथ को सही से यूटिलाइज किया, नहीं किया तो भी नॉलेज ले लो, ठीक Okay, है, okay, sir. ठीक है, तो करो इसको, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करो, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम फिर से पूछ लूंगा। ओके, ओके, Okay, थैंक यू okay. सो मच Thank you, मिस्टर। sir. ओके जी, मोस्ट वेलकम। मिस्टर अरमान, अरमान रिजवी, अरमान इज नॉट देयर। ओके, मिस्टर अभिषेक, Abhishek, audible now? Hello, sir. Yes, Arman. Hi, sir. Good morning. Good morning, good morning. Arman, what you learn from your today's mock? I learned so many questions which interviewer can ask to their their in interview. Okay, like? Like about BIM, about structural engineering, about site engineering, all related to civil engineering. Interview can ask you. Hmm. Any specific question which you feel, okay, this was a very important question, but I don't know about that question answer? Yes, sir. There is one question. I was you ask some like who gave the interview like one minute, I you asked to Rushikesh Suryavanshi that something I can't recall it right now, sir. Sorry. Okay, about eye contact, about what I asked Mr. Rishikesh Suryavanshi, who is on that video, na? About Yes, sir. Yes, sir. It's not Rushikesh. I don't know really, but Rishik. you if your hobby in something, you have Ah, to obsessed with that. yes, I think I You asked have with the Sanjay about the singing the song, right? Related to yes, song, yes, yes. He Mr. tell about Sanjay. the Arjit Singh about, but he Yes, don't know Sanjay. the songs. I just asked with the Sanjay. Sanjay, okay, sorry, Okay, मेरी मेमोरी ठीक है, तुम्हारी गड़बड़ है, ठीक है, जब तक sorry, sir. तुम्हारी ठीक होनी थी तो मेरे से याद आएंगे। Yes, sir. ओके, uh, okay, so what's your hobby? So my hobbies are changing time by time. Right now, I am learning about Da Vinci, Leonardo da Vinci. What is this? Leonardo da Vinci, he made a painting about Mona Lisa. Okay, Mona Lisa is the painting. He made the painting. He was an engineer. Also, he was a structure. In structure, he was a poet, and he is a very curious man in every field. He made some engineering design in
He from France actually. He was from France. He made a dam that this was a beautiful means in engineering that was a dam called I can't explain in English. So ओके ट्राई टू एनहेंस योर इंग्लिश बिकॉज पता है तुमको इंग्लिश का कितना बड़ा समस्या है ये जो लोग अटेंड नहीं किए ना लेक्चर इनका मेन प्रॉब्लम पता है क्या है no sir. कम्युनिकेशन Communication, yes. दे आर नॉट एबल टू टॉक Yes, yes. ओके सो ये जब इतनी बड़ी वीकनेस है जब हमको पता है कि बीमारी हमको ये है तो व्हाई नॉट वी आर वर्किंग दैट ऑन दैट Yes, okay sir. if your Yes. बीमारी is like you are fatty person so you need to drink the hot water na Yes, yes. okay so okay Mr. Arman what you learn in last 1 week In last 1 week, about RERA, hmm about building by laws hmm in live lectures, hmm and in recording lectures. Recently, I watched a recorded lecture about how to make plans, develop plans. okay Yes, how to give an 2D plans, and yes, sir. okay difference between section and elevation In section we can see inside of the structure, like there is concrete or there is bricks or there is steel, uh, detailing inside the structure. And elevation we only can see on the front side, outside from the buildings. hmm. From front we can see in okay elevation. okay what cover we provide in beam uh, I can in beam we provide 40 to 50 cover, sir. बड़ा बड़ा यार अरमान कैसे होगा इसे 30 sorry sir, 30 हम्म, कैसे होगा मतलब तुम तो बेइज्जती करवा दोगे ओके चलो कोई बात नहीं अभी क्या करो अभी मैं जो मैंने वो 11 पेज की पीपीटी दिया है ना तुमको हाँ जस्ट yes. गो इन द लास्ट ऑफ दैट पीपीटी लास्ट के 2 पेजेस उसमें बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है okay Yes. in 11 pages that notes and there is a last 2 pages इसमें कवर है स्ट्रेंथ है किसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है डेंसिटी है सबकी दी हुई है सीमेंट का Hmm. क्या रोल होता है तो पूरा का पूरा डिटेल में है आज के आज उसको फिनिश कर लो नेक्स्ट Okay. मॉक में बस तुम्हारा इतना काम है ठीक है Okay. कि यू जस्ट रिकॉल मी कि सर वो आपने जो बोला था मैंने पढ़ लिया है Okay मे बी sir. आई फॉरगेट क्योंकि मुझे बहुत मॉक लेने होते हैं 100 150 लोगों के तो हो सकता है मैं भूल जाऊँ तुमको याद दिलाना ठीक है सर, ठीक है है. ओके Okay. okay next time I'll just want to see you with your Oh, honesty okay okay sir, thank you. okay yeah Mr. Abhishek Yes, sir. yes Abhishek introduce yourself Good morning, sir. Thank good you for giving me this opportunity. My name is Abhishek Danjore. I am from Nagpur. I have completed my graduation in year 2022 hmm in BE Civil Engineering. I scored 83 percentage. hmm Right now, I am pursuing a civil engineering, uh, unique civil hmm internship in at unique civil hmm about a BIM professional course hmm in which I am going to learn about AutoCAD, Revit, Navisworks, Tekla, software in detail. hmm Right now, I have learned about the AutoCAD and basic knowledge of AutoCAD hmm from the video lectures and live classes. hmm I have the more idea about the AutoCAD now. you're getting benefit from that you are What, getting sir? benefit from the new lectures Yes, means sir. I have you got already a learned the lot AutoCAD of knowledge about AutoCAD. yes okay how many lectures you watch in AutoCAD 11 lectures, sir. 11 lecture if I ask one hard question can you just explain in lecture 1 to lecture 11 what you learn in different lectures? Can you explain? Mm, In lecture from 1 to in lecture 1 about introduction and
about the BIM process, and lecture 2 about the line command, uh, draw draw tab, and in third lecture about the modify tab, Hmm. and in fourth uh, mm, maybe about the RERA rules. Hmm. No, in 11th lecture it is about the RERA rules Okay. and about the dimension properties, Yes. how to set the dimensions exactly, Lecture 6 and 7. and what's that? This is lecture 6 in 7, no? Dimension in lecture 6. Dimension lecture 6. Yeah. In order, sir, somewhat uh, Yes. not remaining properly in Yes, yes. order Okay, in okay. spirit, Okay, no issue. You can explain. and maybe in 10th lecture about the layers, Hmm. and in some lecture about the um, some drawings in which students are facing a problem which Hmm. Doubts. told how to draw make that. Correct. And in lecture 11? Like lecture 11 about the RERA. About the era. Okay. सो कंप्लीट सीरीज में क्या बेनिफिट मिला तुमको? ये क्वेश्चन से क्या हो गया, तुम्हारा पूरा रिवाइज हो गया ना, रिकॉल हो गया ना माइंड पे कि यार ये चीजें हमने हाँ सर, सीख रखा है, राइट? यही करना है हमको. yes sir, तो ये व्हाई आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट दैट क्वेश्चंस, यू जस्ट रिकॉल ऑल द थिंग्स. पूरा रिवीजन हो गया. यू क्रिएटेड द एक्सेल शीट. यू yes क्रिएटेड sir, द I'm एक्सेल preparing शीट. Excel. You Yes completed sir. that Excel sheet? You Sir, in Yes, yes. some lecture about I have to mention properly sir. That's ceremony. ओके, ओके, वेरी गुड. तो क्या हो रहा है, जब एक्सेल शीट पे क्यों लिखते हैं? एक्सेल शीट पे लिखने से यही बेनिफिट होता है, व्हेन यू राइट समथिंग यू जस्ट रिकॉल इन योर माइंड. ठीक है, करना क्या है, यही चीज तो करना है सबको. मैं भी बार बार समझा रहा हूँ कि यू जस्ट लर्न एवरीथिंग और उसको माइंड में मत रखो. जस्ट पुट इन योर सबकॉन्शियस माइंड. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज Yes sir. सबकॉन्शियस माइंड? Yes sir. I should be remember whenever I will be asked. सॉरी, I व्हाट should be इज? remember sir in, in smooth way whenever it will be asked to me. यस. मीन्स सब कुछ हमको क्या करना है, डीपर वर्जन में अपने ब्रेन को समझा देना, भाई ये चीज यहाँ पर है. ओके, सो व्हेन यू जस्ट डू दैट, तो इट विल बी रिकॉल फॉर द लॉन्ग टाइम. आपने ऑटोकैड तो सीखा हो, पहले ऑटोकैड सीखा था कि नहीं सीखा था? सीखा था सर ऑनलाइन. सीखा था ना, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन. देखो, लेकिन क्या इतना परेशान होके सीखा था क्या? एक एक चीज को, टर्म्स What को sir? बार इतना फोर्स होके कर सीखा था क्या? रेरा भी सीख रहे हो, बिल्डिंग बाय लॉ भी सीख रहे हो, और उसको बार बार माइंड पर रिकॉल Yes कर रहे हो, ऐसा actually. किया था क्या? No sir. यही करना होता है. और ये जैसे हर सॉफ्टवेयर के लिए आप सभी लोग करोगे, तो इट विल बी ग्रो अप. ठीक है, धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा. ओके, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट इन कॉलेज? Sir, groundwater quality analysis. ग्राउंड वाटर क्वालिटी एनालिसिस. In, एक्सप्लेन अबाउट दैट प्रोजेक्ट. yes, sir. In this, it was a team of sir 5 members हम्म. in which we targeted a particular area हम्म. of that region. We collected water samples from different sources हम्म. and performed the physiochemical analysis हम्म. on the water and find out what's the and the conclusion was that if the tap water is good or agriculture water is good for consuming and domestic use. हम्म. Okay, what is That's the all, sir. pH of like, at what pH we can drink the water? Mm, Drinking four, water pH. pH 4. 4. भाई टिकट कटने लगेगा सबका, ऊपर भीड़ लग जाएगी. ठीक है, It is not remaining right now. तुम्हारा प्रोजेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आने वाला था, वो तुम नहीं बता पाओगे. व्हाट आर द पीएच ऑफ वाटर वी कैन यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन? ठीक है, ठीक है. जब तुम्हारा प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन फिक्स है कि इससे रिलेटेड होगा. ओके, ट्राई टू वर्क ऑन दैट. ठीक है, मैं Yes, आंसर sir. नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर मुझे अभिजीत से पूछना है. ओके, ग्रेट. मिस्टर अभिषेक, सॉरी अभिजीत, अभिजीत और डोल What, नो, sir?
that is finish subject. Okay, try to just Okay, sir. Thank you. learn about your project, okay, in deeper way, so that if anyone asks the in depth, you can we tell them the right answer. Yes, Mr. Abhijit. Good morning, sir. Good morning. Abhijit, just tell me the same question answer. What pH of water we can drink? Sir, we normally drink water pH which ranges between 6 to 6.5 in general. Drinking water? Yes, sir, drinking water. Okay. And at what pH it will be neutral? Sir, it will be neutral. So it will be neutral. I think it's 6, sir. And what pH we can use in the construction? So it's a 6. It's sure. Means In construction process. Mean Bisleri water we can use in the construction? No, it's not necessary, sir. But 6 is preferred. 7 is the neutral. 7 is the pH at what we can drink the water. Okay. Oh, and for the construction we can use between 6 to 8. Okay, sir. ओके कंस्ट्रक्शन Yes, में sir. अभी बिस्लरी तो नहीं लगाओगे ना? No, sir. No, sir. ठीक है, उसका पीएच 7 होता है, ठीक है. Yes. बाकी सबके पीएच 7 होते नहीं. आपके घर में जो आता है उसका या तो 6.2 होगा, 6.5 होगा, या फिर 7 है तो बहुत अच्छी बात है, 7 ही पीना चाहिए. Yes, sir. Drinking water pH should be the 7, that is the neutral. Yes, sir. ना अम्ली है, ना क्षारी है, ना एसिडिक है, और क्या बोलते हैं उसको आप यूज कर सकते हो. एंड इन कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत गंदा तो चल जाता है ना, तो Yes, दैट sir. इज बिटवीन 6 to 8. 6 to 8. Yes, sir. यस, गेट में 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ था. ओके, अभिजीत इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Abhijit Kumar, and I am basically from Bihar Sharif, Bihar, Nalanda district, and I'm currently living in Bhubaneswar. I did my graduation in 2019 in from NSS Knowledge Campus in civil engineering, and after that I was preparing for government examinations, but couldn't clear anyone. And now due to Corona, that the year 2020, I got a job offer from Simplex Infrastructures, but they didn't call, and then it was over. And after that, I was preparing for the last 2.5 years, and now I'm doing training of BIM under the guidance of Akash Pandey sir. And this course includes a lot of things like AutoCAD, 2D, 3D, Revit architecture, Revit structure, Revit MEP, Navisworks, and BIM 360 softwares like that. But currently I'm at the first phase, and sir has taught till now including AutoCAD, 2D, and up to the point where I'm now able to design basic plans. Basic plan, very good. What is the FSI? Sir, FSI stands for floor surface index, sir. Floor space index. Sorry, sir. Floor space index, sir. Sorry, How sir. can we calculate? Sir, that's the floor space index. Sir, that's related to floor area ratio, and it's calculated as total covered area of all floors when we divide it by the plot area, total plot area. Very good, very good. And what is FAR? Sir, FAR stands for floor area ratio. So it's actually the ratio of buildings total floor area to the size of the land, or we can say the plot area. Very good, very good. Okay, and one last question from you is, what is building line? Sir, building line. Sir, that's the line which is mandatory for commercial complexes and commercial structures like cinema halls, hotels, restaurants, and other commercial structures, beyond which they have to initiate the construction process. Okay. That means they cannot construct before that. They have to construct after that. Very good, very good. Yes, sir. Thank you so much, Mr. Abhijit. This was nice to talk with you. Thank you. Okay.
Thank you, sir. चलेगा। ठीक है जी, सबका मॉक हो गया। ठीक है, कल भी क्लास है। ठीक है, कल आपका हॉलीडे नहीं है। ठीक है, और कल क्लास है। ठीक है, कल का क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसलिए कल का क्लास आप जरूर करेंगे। विवेक, आप नहीं रह गए क्या? यू ज्वाइन लेट विवेक, ऑन योर माइक। Yes, sir. यू ज्वाइन लेट ना? Yes. एट व्हाट टाइम? 7:10. 7:10। व्हाई? सर वो सो गए थे? नहीं, हॉस्टल पे मेस पे गया था ओके, यू तो आर इन द लेट हो हॉस्टल। गया। सो यस। यू डूइंग डिग्री राइट नाउ? यस सर, आई कंप्लीटेड, मतलब देन व्हाई यू इन हॉस्टल? आई एम लिविंग फॉर माय complete my internship. I ओके, recently just in the college project, completed. in college campus? No sir, I am complete pursuing my internship at Indo-German tool room Aurangabad. Aurangabad. So they just offer you the PG. I mean, P is PG. No sir, I am living in Samas Kalyan's hostel, boys hostel Aurangabad, Okay, this is the hostel in Aurangabad. government Okay, hostel. government hostel. Okay, in Aurangabad. So Yes. in Aurangabad there are some beam company. You know about any beam company name? Yes, yes sir. Which one? Sir, Sanvio and uh, Cubetics. Cubetics. And one more, Excelize something, right? Excelize, I don't know, sir. Yes. These two companies There are are. come for placement in my college. Okay, in your college. Internship. Okay, in internship. So you just attend that internship, like that interview. Yes, sir. What the question asked? No, sir. I am not allow for interview. I'm dropped for because of in GD In GD group only. discussion. Okay. For Okay. Okay. Tomorrow is basically your GD is something related to GD, not exactly GD, but that is related to GD only. Okay. mm. So tomorrow try to attend that. Okay. So what was the topic in GD? So topic was online lectures. No, no, sorry. The softwares used for benefits and demerits and merits of softwares used So in you are real in life. which like your topic was to demerits or like merits? No, sir. Both. Both. Mm. Okay. So can you just explain what are the merits of the softwares or what are the demerits? Sir, merits of the software is we utilize your time, save your time and money, Hmm. and uh, more work is done software automatically. Hmm. No need, no, and work from home, and you just work where you uh, anywhere. Hmm. And demerits are, uh, sir, we uh, we have to, sir, sorry, I Hmm. can't explain the more. Because of your communication, Yes, sir. right? Means This communication is weak. your communication is weak. That's why you're not getting the that selection. The company is very nice. What are the questions they asked with the other of your friends? You remember that? Yes, sir. They ask for related to building drawing, elevation section image. They ask to draw. They given a plan Hmm. and ask to draw elevation of the this plan. Correct. And more questions are asked personally and some basic of civil engineering, Like. like IS codes Hmm. use and modeling softwares which are you learn, Hmm. uh, and reinforcement Hmm. is details. Hmm. Yes Okay. sir. और तुम्हारे मॉक में सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या? Yes sir. नहीं, अभी ये मॉक पूरे ये मॉक में अगर ये मॉक पहले अटेंड किया होता है या फिर पहले अगर ट्रेनिंग किया होता तो तो आज मैं सैनवियर में होता। यस, यही करना है। और ये अपॉर्चुनिटी लोग मिस कर रहे हैं।
राइट? आफ्टर लाइक अटेंडिंग दैट प्रोग्राम, उसके बाद भी लोग अटेंड नहीं किए, क्यों? क्योंकि उनको फियर है चीज़ों का। ठीक है, यू आर ब्रेव पर्सन, ठीक है, नहीं आता कम्युनिकेशन, इंप्रूव कर लेंगे, है ना? ठीक है, यस सर। इंजीनियर है तो हमें कोई चीज़ नहीं आ रहा है। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यही है कि व्हाट यू डूइंग फॉर योर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन। Sir, I joined your class which you suggest in WhatsApp group communication. Okay, you join there. Not joined it yet. Lately, Okay, okay, I'll you can join be soon. joined, you can just talk Soon. with my team and you can just continue that. Okay, and Okay, sir. that is one step. Second step, you need to be, Practice. yes, practice the best thing. Definitely if you have a practice options तो you can just talk with your friends, okay, as much as possible. क्यों? क्योंकि देखो कम कोई भी चीज़ वीक है अगर, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारी बॉडी वीक है तो क्या करोगे? डाइट अच्छी लोगे ना। Yes. ठीक है, इसको भी डाइट देना पड़ेगा ना। क्या डाइट है? न्यूज़पेपर पढ़ लिया, एक डाइट हो गया, है ना? दूसरा डाइट हो गया कुछ लिसन कर लिया, मतलब आजकल बहुत ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, उसको लिसन कर लिया, दूसरा डाइट मिल गया। तीसरा डाइट हो गया प्रैक्टिस कर लिया, 4-5 लोगों से बात कर लिया कम्युनिकेशन इंग्लिश में। डाइट दे रहे हो ना, जब डाइट दोगे तो Yes. क्या हो गया? बॉडी बन जाएगी, Yes, कम्युनिकेशन sir. अच्छी हो जाएगी। तो इसको आज से इम्प्रूव कर दो, ठीक है? तो ये, और दूसरी चीज़, वेन एवर यू जस्ट टॉक विद समवन, ऐसे जैसे तुम्हारा ये सैनवियो का केस हुआ, अब ऐसे तुमको पता करना चाहिए कि नेक्स्ट कौन सी कंपनी आई थी, वहाँ क्या पूछे थे, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, मैं कितना कैपेबल हूँ उस चीज़ को करने के लिए, है ना? इस Yes, तरह sir. की चीज़ों को इम्प्रूव करो, और क्या बोलते हैं, अगर कर लिया तो डेफिनेटली धीरे 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 ग्रो हो जाएगा, और नहीं किया तो फिर तो जानते ही हो ऊपर वाला ही मालिक है। ओके, ग्रेट। चलो, थैंक यू सो मच विवेक। कोशिश करो कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम और अच्छे से परफॉर्म करो। ओके, Yes, sir. Thank you. ओके। नाउ व्हाट रेट टुडेस यू गाइस गॉट, ठीक है, वो बता देता हूँ सबके जो आपकी रेटिंग्स मिली हुई है। एंड रेटिंग इज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज विनोद गॉट 4, उमा भारती गॉट 4, सौम्य रंजन गॉट 3.5, श्वेता गॉट 3, संजय गॉट 3, ऋषिकेश गॉट 4, ऋषिकेश सूर्यवंशी गॉट 4, एंड ऋषिकेश गॉट 2.5, and Rituja got 2.5, Prathamesh got 3, Prathamesh Vondi got 3.5, Pradnesh got 2.5, Chiti got 3, Gaurav got 4, Arman got 3.5, Abhishek got 3, Avjeet got 3.5, Vivek got 3. दिस इज द स्कोर यू गॉट टू डेज। एंड क्या बोलते हैं, अभी हमको और इम्प्रूव करना है। सबसे ज़्यादा जाओ आपका कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा रेट कटता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के 3 मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है, और वो 3 मार्क्स होते हैं। ओके के लिए कोई मार्क्स नहीं है, 0 हो जाता है, ठीक है, और वीक है तब तो 0 ही है, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन पर 3 मार्क्स में से 2 मिलते हैं, और एक्सेलेंट कम्युनिकेशन पर 3। तो कोशिश करना, कम्युनिकेशन का जब 3 है तो कितना मैटर करता है ना, तो इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करना है, कि जिससे हमारा कम्युनिकेशन जल्दी से जल्दी इनहेंस हो जाए। क्यों कम्युनिकेशन में प्रेशर दे रहे हैं गाइस? क्योंकि बीआईएम मतलब दूसरा इसका लैंग्वेज है कम्युनिकेशन। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करोगे, कैसे करोगे? फॉरेन के प्रोजेक्ट्स होंगे, बात करोगे, कैसे करोगे? इंग्लिश में करोगे, ठीक है। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें बार बार कम्युनिकेशन पे फोर्स